Good morning, dear students. I welcome you all in computer class. Today, we are going to learn about some of the topics of chapter number 10 and chapter number 11, that is networks and introduction. Okay, so let's start it. So first of all, about the network, what is a computer network and how you can define it. Okay, the first point is what is computer network. So whenever you communicate between two or more computers, this is known as computer network. Okay, so whenever you share some kind of data between two or more computers, this is also known as computer network. And in the computer network there are some also features occur. Okay, so what kind of these features also, so you can read it here. Okay, so first feature is data and hardware resources sharing, which means that you can share your data from one computer, okay, to another one without any complication or complexity. Okay, you can simply just transfer the data from wire, okay, from one computer to another computer. So this is how you can share the data and hardware resources also. Okay, so just suppose कि अगर आपने एक कंप्यूटर से डेटा सेंड करना है किसी दूसरे कंप्यूटर में, तो वो अगर वो नेटवर्क में कम्युनिकेटेड है, नेटवर्क में कनेक्टेड है, तो देन दे कैन सेंड और शेयर द डेटा बिटवीन देम. ओके, so that's how your first point is occur. The next one is topology. Topology means how the physical arrangement of computers look like. Okay, the physical arrangement of computer system, just like in your lab the computer are arranged in a sequential manner or in a radio manner or linear manner, जिसको हम बोलते हैं bus topology. Okay, so that's how define the arrangement of your computer system. It's a linear or bus topology or any kind of topology. Okay, so this is known as topology. Okay, these all topics are cleared in the Zoom classes. We are just going through the device and your practice session. So next one is network architecture. Network architecture means whenever you use client to server architecture, which means that client is demanding the information and server is receiving the information. Okay, so whenever you access some kind of data on the website or from the Google, so you are just a client. Okay, so which website giving to your data or some kind of information, that website is known as server. Okay, so that's how your network architecture is defined in your network. Next one is network protocol. Network protocol means set of rules which you have to follow to complete a communication, or you can communicate with the help of set of rules. Okay, so set of rules is known as protocols. Here's your definition: a set of predefined rules and guidelines regulating the communication between network devices. So whenever you communicate from one device to another device, you should have some kind of protocol. So that is known as set of rules. Okay, so let's move further. Next one, we have the types of computer network. The first one type is known as LAN. LAN means local area network, which means that your all devices can connect with locally placed. Okay, just like in your computer lab also or your admin department also, all the computers locally connected to each other. Okay, this is known as LAN. Okay, the next point, that is the wide area network. Wide area network, which means whenever you connect whole universe or you can connect the whole world computer to each other, so this is known as WAN. And WAN is also example of internet. Okay, so whenever you access the internet, that is mean all the computer that are present in the world or in the earth that can be connect each other using the WAN network system. Okay, so wide area network means इंटरनेट. दैट इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ योर वाइड एरिया नेटवर्क. यहाँ पे क्या होता है कि आपके जितने भी कंप्यूटर्स हैं दुनिया में, वो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं एंड इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ. सो दैट्स हाउ योर वाइड एरिया नेटवर्क कैन कम्युनिकेट टू ईच अदर. ओके, so next one is metropolitan area network, which means that your computers or your devices are connected in a single city. ओके, सिंगल सिटी में जितने भी कंप्यूटर्स होंगे वो एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे और कम्युनिकेट कर पाएंगे एक दूसरे से. दिस इज नोन एज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. ओके, सो ऑल्सो नोन एज मैन. Next one is campus area network. Campus area network, which means that whenever you access the internet or any kind of data in your campus or your school, so this is known as campus area network, which means that कि जो availability आपके campus में ही है, आपके schools में है availability है. Suppose
अगर वहाँ पे वाईफाई अडेप्टेबिलिटी है तो इसका मीन क्या है कि आपका जो कैंपस है वो वाईफाई कैंपस है और जितने भी वहाँ पे डिवाइसेस होंगे वो वाईफाई से कनेक्टेड होंगे, तो दिस इज नोन एज कैंपस एरिया नेटवर्क. नेक्स्ट वन इज पर्सनल एरिया नेटवर्क. In this scenario, you will share the same kind of data to two or more devices. Just like कि अगर आपने कोई डेटा या फाइल को सेंड करनी है अपने 3 या 4 फ्रेंड्स को एक ही टाइम पे, so this creates a personal area network, which means that वो तीनों डिवाइस क्या हैं, वो आपके फोन से कनेक्टेड हैं. Then you can share the data through wireless or wired. Okay, that's upon the changes or the choice of you. Okay, so let's move further. So next one is interrelated terms, internet related terms. Those are the intranet. The first term is known as the intranet. We also discuss about in the Zoom class also. So here also we can discuss about the intranet. So basically, what is intranet? Intranet is a private computer network. I repeat, intranet is a private computer network which connect all the devices that are present in an organization. Okay, within an organization, which means that कि अगर आपके पास इंट्रानेट है तो अगर आप चाहते हो कि आपका जो इंटरनेट फैसिलिटी है वो सिर्फ आपके स्कूल को ही प्रोवाइड हो, कि कोई बाहरला यूज ना कर पाए, तो उसको हम बोलते हैं इंट्रानेट. ओके, whenever you connect a private computer network connecting 2 or more nodes means devices. Okay, you can say that devices within an organization. Okay, so ये organization में ही present होता है, ये किसी बाहरले के लिए publicly available नहीं होता. आपका जो इंटरनेट है वो publicly available होता है, पर जो आपका इंट्रानेट है that is not a publicly available. Okay, so next one is internet service provider, that is known as ISP. So whenever you access the data or internet on your smartphones or computer or any device, okay, whenever you use internet, so that internet comes from which organization? This is known as ISP. In short, कि अगर आप कौन सी सिम यूज कर रहे हो, जैसे आप वोडाफोन की सिम यूज कर रहे हो या जियो की सिम यूज कर रहे हो, तो जियो क्या है, वो एक ISP है जो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है. ओके, इसे हम बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. Okay, those who provide you an internet service, this is known as ISP. Okay, so next one is internet protocol. Internet protocol is also explained to you. Protocol, what is protocol? A set of predefined rules which have to be followed to complete a communication or change or start any communication. Okay, so what is IP address? IP address is a unique address which is given to every device. That is every device. You can say that आपका स्मार्टफोन, उसमें भी आपका एक IP यूनिकली एड्रेस होगा. अगर आपका स्मार्टफोन है तो आपके स्मार्टफोन में जो IP एड्रेस होगा वो किसी और स्मार्टफोन के IP एड्रेस से कभी भी मैच नहीं करेगा, ये यूनिक होता है. अगर आपके पास एक मोबाइल है तो उस मोबाइल में एक IP एड्रेस होगा जो यूनिक होगा पूरे वर्ल्ड में, वो किसी से भी मैच नहीं करता. सो दिस इज नोन एज IP एड्रेस. ओके, जो आपको इंडिविजुअल बनाता है, जो आपको यूनिक बनाता है ओवर द इंटरनेट. ओके, यू कैन यूज द इंटरनेट यूनिकली और प्राइवेटली यूजिंग द इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस. ओके, अगर आपके पास IP एड्रेस नहीं होगा तो आप इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते. ओके, आप इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते. सो दैट इज अ यूनिक नंबर जनरेटेड फॉर एवरी डिवाइस और कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क टू कनेक्ट टू इट. ओके, so next one we have internet more terms, that is the domain name system. I also explained you that domain name system क्या होता है. जब आप किसी IP एड्रेस को कोई नेम दे देते हो वेबसाइट का, जैसे YouTube है तो YouTube को कोई, उसके पीछे भी कोई IP एड्रेस है. ओके, उस IP एड्रेस को आपने एक सिंपल इंग्लिश जो है वो नेम दे दिया है जिसको हम बोलते हैं YouTube. ओके, तो अगर आपका YouTube बेटा आप चल रहा है ना, YouTube सर्च करते हो गूगल पे, तो उसके बिहाइंड कुछ IP एड्रेस होता है. ये मैंने आपको ऑलरेडी जूम क्लासेस में भी एक्सप्लेन किया है. ऐसे कुछ करके उसका IP एड्रेस होगा. ओके, फॉर एग्जांपल, ये मैंने एग्जांपल दी है. सो एवरी डोमेन नेम कंसिस्ट ऑफ सम काइंड ऑफ व्हाट IP address. So here you can see that used to translate a host name, domain name to IP address. ओके, जैसे अगर आपका कोई IP एड्रेस है तो उसको आप एक सिंपल इंग्लिश नेम देना चाहते हो तो यू कैन गिव इट यूजिंग अ डोमेन नेम सिस्टम. ओके, सो दैट्स हाउ योर डोमेन नेम सिस्टम इज वर्किंग. नेक्स्ट वन इज नेटवर्क स्विच.
So what is the network switch? Whenever you connect two or more devices or multiple devices at a single time, you can use the network switch. Okay, nodes means devices. I also explained here there. Hub, what is the hub? Hub can transfer the data from one computer to another computer using a simple technique. Okay, it is the most basic device connecting multiple computers or devices on the network, that is known as hub. Okay, next one is router. So what is router? A hardware device designed to receive and analyze the forward incoming data to another network. So router, router क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको explain करना चाहता हूँ what is router. जो राउटर है वो आपका डेटा आपसे कलेक्ट करता है और किसी अगर डिवाइस को यूनिकली आपने सेंड करना हो, आप चाहते हो कि किसी यूनिक कंप्यूटर को ही वो डेटा जो है वो सेंड हो, तो वो राउटर करता है. हब क्या करती है? अगर बहुत सारे कंप्यूटर्स एक ही नेटवर्क में कनेक्टेड हैं, तो अगर एक कंप्यूटर ने डेटा को सेंड किया तो वो बाकी कंप्यूटर्स को भी डेटा सेंड होगा. ओके, ये हब का सारा काम है. ओके, तो ये क्या करती है? हब. पर राउटर क्या करता है? अगर आप एक स्पेसिफिक कंप्यूटर को डेटा सेंड करना चाहते हो, सपोज करो कि आप एक डेटा सेंड करना चाहते हो कंप्यूटर नंबर 1 को और कंप्यूटर नंबर 2 को आप डेटा सेंड नहीं करना चाहते, तो राउटर दैट परफॉर्म दैट. ओके, राउटर सेंड द डेटा यूनिकली. ओके, so that's how you can analyze and forward the data. Next one we have also the network advanced concept. This is known as also IP, internet protocol. This also concept, these all concept I explained you. Okay, previously I explained you, or any other Zoom classes also explained you. IP address, which means that internet protocol that is uniquely defined you on the internet. If you have IP address, then you are able to connect to internet. If you don't have any kind of IP address, you not able to connect to the internet. So that's how your internet protocol is working. Okay, I hope you got my point. So next one we have also the next slide. This is known as the protocols, the set of rules. We also discuss the TCP. What is TCP? Transmission Control Protocol. इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होगा तभी आप एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे नेटवर्क डेटा को सेंड कर सकते हो over the internet. Okay, so this is how you protocols are working. Here's the definition of protocols: used to govern the simultaneous exchange of information between many computers connected in a network. Which means that अगर आपके पास millions of computers connected हैं on a single network, जिसको हम इंटरनेट भी बोलते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क भी बोलते हैं, तो उसको चलाने के लिए, इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए आपको टीसीपी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. Protocol, which means set of rules which you have to be followed to complete a communication or to establish a communication. Okay, so that's how your protocol is working. Here you can see that your one computer data can send to another one using a TCP IP or any other protocol. So here is the protocol, and many types of protocol is there. Internet protocols we also discuss. Okay, so next one is transmission control protocol. That's also discussed in the video also. Okay, what is the transmission control protocol? Whenever you send data from one computer to another computer using wirelessly, so there should be a one TCP protocol. Okay, which means that transmission control protocol which send your data to particular device or particular computer. Okay, that's how your TCP is working. So next one is transmission control protocol and IP. Okay, this is known as transmission and IP. In this scenario, both protocol are working together. Okay, next one is file transfer protocol. Why? What is the purpose of file transfer protocol? Okay, the main basic idea behind the file transfer protocol is that whenever you upload or download the file from the internet, the file transfer protocol should be used. Okay, सो आप कभी भी अगर इंटरनेट पे फाइल को अपलोड कर रहे हो ना, तो कभी भी अपलोड कर रहे हो या डाउनलोड कर रहे हो कोई भी फाइल को, तो वहां पे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल काम करता है. ठीक है, कोई भी फाइल, चाहे आप व्हाट्सएप पे डाउनलोड कर रहे हो, चाहे आप यूट्यूब से डाउनलोड कर रहे हो, चाहे किसी वेबसाइट से डाउनलोड कर रहे हो, तो वहां पे आपका प्रोटोकॉल कौन सा काम करता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ओके, FTP, इन शॉर्ट FTP. नेक्स्ट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो आपकी वेबसाइट को चलाने में आपकी हेल्प करता है. हर एक वेबसाइट के स्टार्ट में आपको HTTP मिलता है, विच नोन एज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. Okay, so whenever you connect any website from the Google, you should use hypertext transfer protocol. Okay, so what is mean? Next one is HTTPS, which S means secure.
This is also known as hypertext transfer protocol, but secure. This kind of protocol is used by banking devices or banking website. Okay, whenever you visit sbi.com, hdfc.com or any other bank website, so there should be HTTPS, which means secure. Your transactions of banking transactions should be secure. So that is how the HTTPS is different from HTTP. Okay, HTTPS varied because it's secured. Okay, next one is simple mail transfer protocol, which means that whenever you send or receive email over the internet, you should use the SMTP. There should be used the SMTP, which means that आपका जो SMTP है वो बहुत ज़्यादा important है whenever you send email or receive an email. Okay, so that's the most important SMTP feature. Next one, we already discussed about the transmission control protocol here also. These all protocol discussed here. Okay, so I hope you got my point. Okay, so your book also explained about these protocols. Next one, we have a cloud computing. And what is cloud computing? The first of all, the cloud computing is known as online storage system. मतलब क्या है? आप अपनी कोई भी फाइल को ऑनलाइन स्टोर कर सकते हो अपने जीमेल अकाउंट पे. जैसे आप कोई वीडियो को स्टोर करना चाहते हो, किसी मूवी को ऑनलाइन स्टोर करना चाहते हो और आप उसको कहीं से भी असेस कर सकते हो. इसको हम बोलते हैं ऑनलाइन कंप्यूटर सर्विसेज. मतलब क्या है कि अगर आप कहीं बाहर गए हो और आपने अपने कंप्यूटर से कोई आपकी फेवरेट मूवी जो आपने अपने अकाउंट में जो है वहाँ पे अपलोड की हुई है, तो आप कहीं पे भी हो, अगर आपके पास आपका कंप्यूटर है या नहीं है, सपोज कीजिए आपके पास आपका कंप्यूटर नहीं है, आपके पास सिर्फ आपके पास आपका जीमेल अकाउंट है, आपके पास मोबाइल भी नहीं है, तो आपको बस चाहिए इंटरनेट एंड योर जीमेल अकाउंट. whenever you log in from any internet device, you can access your computer or your movies, your songs, whatever you want to use it. Okay, so जो भी आपने अपलोड किया होगा ऑन द क्लाउड विच मीन्स कि जो आपका ऑनलाइन स्टोरेज सिस्टम है, गूगल प्रोवाइड करता है. उसके एग्जाम्पल भी है iMap जो जीमेल यूज करता है. गूगल ड्राइव यूज करते हो ना, गूगल ड्राइव पे आप कुछ भी फाइल्स को अपलोड कर सकते हो और आप कहीं से भी उसको असेस कर सकते हो. डजेंट मैटर कि आपके पास आपका मोबाइल फोन है या आपका कंप्यूटर है या नहीं है. ओके, आपके पास आपकी जीमेल अकाउंट का पासवर्ड होना चाहिए जो आपकी जीमेल आईडी है, और आपके पास क्या होना चाहिए, इंटरनेट. So these two requirements for accessing a cloud computing. Cloud computing means no service on the basis of hardware. It just depends upon the online. Everything you can access online. Okay, so this is known as cloud computing. So here's the feature also, no permission needed to access the computer services. Okay, किसी की permission नहीं चाहिए आपको, आप कुछ भी इंटरनेट पे ऑनलाइन अवेलेबल accessibility कर सकते हो. जैसे आप YouTube पे देखते हो वीडियोस, तो वहाँ पे बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड हैं. आपके पास सिर्फ आपका मोबाइल हो ना हो, कोई भी डिवाइस हो, तो आप उसको असेस कर सकते हो यूट्यूब वीडियोस को. ओके, एनीवेयर फ्रॉम द वर्ल्ड, किसी भी जगह से, डजेंट मैटर कि आप कहाँ पे हो, आपके पास आपका कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस है या नहीं है, आप असेस कर सकते हो. You can access the audio also, you can access your emails, you can access your videos, movies, chattings. Okay, so that's how the cloud computing is working. Next one, we have also discussed about the cloud computing. Here is your book definitions about the today worlds, how the cloud computing is working or not. Okay, these are the main examples of cloud computing. And next one is, what is a cloud computing used for? Google platform. I also discussed you about previously कि what is Google platform? Your Google Drive is a Google platform for cloud computing. Let's suppose, देखो यहाँ पे कि आप ये सर्विस प्रोवाइड, ये एक सर्वर है. सर्वर मीन्स यहाँ पे सारा डेटा आपका स्टोर हुआ है, तो आप डिफरेंट डिवाइसेस से अपने जो भी डेटा आपने अपलोड किया है, आप उसको असेस कर सकते हो कहीं से भी, दुनिया में आप कहीं पे भी हो, किसी और कंट्री में हो, कहीं पे भी गए हो. अगर आपके पास आपका मोबाइल फ़ोन है या नहीं है, डजेंट मैटर. आपके पास कंप्यूटर है या नहीं है, डजेंट मैटर. आपके पास इंटरनेट असेसिबिलिटी होनी चाहिए और आपका जीमेल अकाउंट का पासवर्ड होना चाहिए. यू कैन असेस योर ऑल द ऑडियो फाइल्स, ऑल द वीडियो फाइल्स, wherever you uploaded on the Gmail account. Okay,
सो गूगल प्लेटफॉर्म क्या करता है, आपको अवेलेबल करवाता है कि आप ऑनलाइन अपनी फाइल्स को स्टोर कर सकते हो। अवेलेबल फॉर कॉमन यूज, ओके, पब्लिक कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। लिमिटेड स्टोरेज स्पेस, बिकॉज कोई भी एक्सेस कर सकता है, फ्री में है तो आपको लिमिटेड एक्सेस मिलती है। अगर आप उसको पे दोगे तो मतलब क्या है, आप उसके चार्जेस अगर दोगे तो आपको वो अनलिमिटेड भी मिल सकता है। ओके, सो पासवर्ड प्रोटेक्शन ऑल्सो, मतलब क्या है, वहाँ पे पासवर्ड प्रोटेक्शन यूज होता है, तो आप पासवर्ड के थ्रू अपने लॉग इन कर सकते हो। Next one is OneDrive. OneDrive is an example by Microsoft. This is also known as the first examples of your cloud computing. You can store your data or your files on the OneDrive that is organized by the Microsoft or launched by the Microsoft. Okay, so you can store the files. Also, the YouTube is also an example where the OneDrive is uploaded all the files. Okay, so that's the basic examples. Okay, so I hope you understood very well about those points. Okay, so thank you for today class.